Hi. Am I audible? Please confirm if my voice is audible. Okay. Thank you. Thank you for confirming. Good. So, good evening, all of you. So, today we are going to discuss about logical reasoning. Okay. So, logical reasoning, I hope many of you have already joined. So, we can start. I'm seeing more than 100 concurrent viewers here. So yes, I guess we can start and others will join in between. Right, so very good evening all of you. And in this cold winter time, winter night, winter evening time, all of you are here. So I would like to congratulate and thank you everyone. ओके तो शुरू करते हैं आज का मैथमेटिकल एडवेंचर एंड फ्रॉम लास्ट टाइम आई गॉट सम कमेंट्स in chats also and through some personal contacts also that we can have mixed language. How many of you are comfortable in Hindi? आप में से कितने लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? I'm having a comment here, Aditya. I have a question. 125 into 45. Arey, that's very easy, yeah. How to do big DI calculation. Sarvesh will be discussing about more calculation in the next further calculation methods and DI and calculation classes. Comfortable in both Hindi, me, yes. Okay, right. So I will try to have a mix of both Hindi and English. क्योंकि पूरा English में it may not be comfortable to many. So we'll have a mix, right? Both in both. Good. ठीक है, बढ़िया. तो I will try to keep good mix of both English and Hindi. ठीक है जी, ठीक है. आदित्य बोल रहे हैं नहीं हुआ था. 125 into 45 is very easy. You can do it in various ways. You can always break a number. But as I said earlier, we will discuss about more calculations in further calculation sessions, not now. We have few major journey, no Hindi, please. Don't worry. Yes, that's a good question. Yash is asking, please tell me कि puzzle start कैसे करूं? LRDI में basic से start कैसे करें? Yes, that's our topic today. So don't worry about the calculation part. We'll be discussing many more methods in the coming sessions. So our today's topic is about logical reasoning. And today specifically we are going to discuss some brain freezing puzzles. It's already freezing atmosphere around, है ना. ऑलरेडी ठंड का मौसम है, लेकिन कुछ ऐसी पजल्स, देयर आर मैनी पजल्स विच डू नॉट मेक आवर ब्रेन वर्क, जो ब्रेन को फ्रीज कर देती हैं. सो वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट आइस, राइट. सो दैट्स आवर टुडेज पर्पस. सो हाउ टू डू दिस और कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, हाउ टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली. ठीक है. यस, बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस actual CAT problems today, not at all. We'll be starting with very basic. My only objective in all of the earlier sessions as well, and now also and further also, is that only, that I want to make you start thinking, right? I want to make your brain work. The moment your brain will start working, जैसे ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा,
then no one can stop you, right? No one can stop you. So that's our whole objective. There is unlimited supply of questions in the present scenario, the present age in which we are living. There is no limit. There is enough material everywhere, all around. Wherever you can go, you can find lot of resources available there. But unless and until your brain starts working, जब तक आप खुद से सोचना शुरू नहीं करेंगे, खुद से दिमाग लगाना शुरू नहीं करेंगे, so you cannot get confidence, you cannot get mastery over any topic. Okay, so don't think that only cracking the exam is my target. Even if that is the target, that also can be achieved only if you start thinking on your own. Okay, so all the faculties, all the teachers, all the resources can only provide you some direction, but it's you who are to move on that path. Okay. Okay, let's start now. So as LID का basic बता देना, so it will be more easy. Yes, as I have discussed Pritha, so don't worry. So first I am telling you about the various varieties of questions which are appearing in CAT in this topic, logical reasoning. So those who are going for CAT for the very first time, yes, Sudoku can help on this. Yes, Nilay, आपने मेरी बात छीन ली है. We are going to discuss lot of varieties of questions, how to develop, how to think, and Sudoku is one of that. So don't worry, it will be included in today's session. Okay, तो हम start करते हैं. So first I am telling you some of the varieties of questions which we find in this part of logical reasoning. So logical reasoning is one of the sections in CAT जिसमें लॉजिकल रीजनिंग पे बेस अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो वन ऑफ देम इज लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट. So some persons are there or some things are there which are to be arranged in a line, and that's called a linear arrangement. We'll be seeing some of the examples very soon. And similarly, there is an arrangement known as circular arrangement or basically closed arrangement. It may be around a circular table or a rectangular table or maybe something else, right? Yes, many of you I know that you will be appearing for the CAT for the first time. That's why I'm discussing that this logical reasoning is one of the sections in CAT जिसमें logical reasoning या LR based puzzles या various variety of questions पूछे जाते हैं. वो क्या क्या variety के questions हैं, the different varieties, that's I'm listing here few of them. And उसके अलावा भी जो पूरा CAT पेपर है and all other exams also, all other competitive exams, basically MBA entrance exams, be it your quant section, be it your DI section, be it your verbal section also, so they require you to think logically, right? So logic is always there, है ना. It's not that कि कुछ syllabus है, कुछ रट्टा मार लिया, कुछ formula याद कर लिए, समझ में आए ना आए, I will memorize, है ना. So just memorization will not help, right? So memorization will not help. Is there any need of making notes in DILR sessions? I would like to, thanks for pointing this out. So it's important, I wanted to say this, that whenever you are attending any of the class, you should have a notebook with you and you should note down the important points, whatever key learnings are there. And specifically in LRDI part, specifically LR part today, what we are going to discuss, we are going to solve a lot of problems we are going to solve. ठीक है ना. तो साथ साथ क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं. There will not be any formula, as I already mentioned. There is not any formula which we are going to discuss. No formula, no particular method. But how to think, है ना, ये हम आज सीखने वाले हैं. ठीक है. Now we will start. Some of you are saying, let me read some comments. Is there any need for making notes? That's what I have discussed. This time I got negative in DILR. Yes, many students get negative because जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम कुछ ना कुछ मार्क कर देते हैं. And that habit of guessing randomly is very poor habit. So this thing also I'm going to tell you repeatedly in almost all of my sessions. Never ever guess randomly. We can make use of options, that's a good strategy, but guessing the options randomly, that's always very disastrous. So never do that. Accuracy is the key. I repeat, accuracy is the key. So try to improve your accuracy always. That will give you confidence. We may not know many things. ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, है ना. So accept that and try to improve. है ना. Don't try to put a false face कि मुझे सब आता है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. Don't do that. So this time I got negative. Okay. Now solving quants thoroughly helps DI, LRDI as well. Yes, of course. Practice is the most important thing. So whether it is quant or LR or DI, whatever. Okay.
Yes, there will be different sessions of LR and DIE. Yes, of course, Ramesh. Let's move further now. So linear and circular arrangement. The other topic is distribution. So in distribution, generally we have same things, but we represent them it in a tabular format and then we solve it. And then Sudoku, one of you mentioned that. So Sudoku generally comes in that part. So we'll be discussing about that. Okay, let's move further. Now, one is ranking. So some things are given, उसको हमें rank करना होता है किसी ना किसी order के अंदर. तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा. कई बार कुछ लोग जो है एक पार्टी में पहुंचे ये पहले आया वो बाद में आया. That is also part of ranking. And somebody is taller, somebody is shorter, and somebody is not the tallest, somebody is not the shortest. So we need to arrange them accordingly. So that's also part of ranking. And maybe weight, maybe age. There can be different things. So that's another variety. One variety is called games and tournaments. So games and tournaments questions, sometimes we can categorize them in LR or sometimes we categorize them in DI as well. So that's also a part which involves your logical thinking, logical reasoning. And after that, we have various kind of number puzzles also. So number puzzles, basically we can say quant based puzzles. There was a period in CAT, I think I would term it around 2012 onwards. लगातार कई सालों तक जो है कैट के अंदर जब ऑनलाइन कैट बिकेम ऑनलाइन तो उसमें क्वांट बेस्ड पजल्स सेट्स आने लगे थे जो कि नॉर्मल पजल से अलग होके दे वर बेस्ड ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ क्वांट. सो नंबर बेस्ड पजल्स और नंबर पजल्स इज वन सच थिंग and binary puzzles is also one thing. What is binary puzzle? I hope many of you know. So binary puzzle में normally जो questions होते हैं, binary means you know that 0 or 1, या तो होगा या नहीं होगा, yes or no. Basically truth, if someone is telling truth or someone is telling lie. So truth or liar, all these things are there. And then some pattern based puzzles and many more varieties are there. Okay, so let's start now. It's already more than 200 students here. So here is the warm-up. So, ready for warming up? Right. So, here is the first question for you and no guesses. Anish is asking about, sir, what about solving cubes? Cube we will be discussing in geometry also as well. Anisha, sorry. Okay, so here is the first question and I am looking for your answers in comments. So, here is the first one. I'm reading it for you. A man has 12 sons and each of his sons has one sister. How many children the man has? I'm looking for your answer in comments. You can try again if you are not sure about your answer. Some of you are saying 24, some are saying 13. Initially, I saw one student said 144 also. Anyway, so correct answer is no prizes for that, of course. It is 13. It's not 24. Would anyone try to write in the comments why 13? Why not 24? Why not some other answer? How do you get 13? Yes, that's correct. 13 is the right answer. Oh, Mejo is not sure. He's saying, I don't know. Yes, Shravani, that's correct. 12 plus 1. Some of you are asking. Now see here, it's a very easy question. A man has 12 sons, right? So there are 12 sons and there may be some daughters also. And there's a question that how many children the man has. So sons are already there, 12. And we just need to add the number of daughters. Now it is given that each of his son has one sister, right? Each of his son has one sister. So it's not that every son has got a separate sister. If only one daughter is there for this man,
So that one daughter is the sister of each of the son, isn't it? So number of children here is simply 12 plus 1. Right? So 12 plus 1, that is 13. So 12 sons and 1 daughter. I hope this is clear. There should not be any doubt. Let's move further. Yes, one sister is common for all sons. That's correct, Neha. Good. Let's move further now. Next question. Try to answer it fast. Joseph, Kevin, and Nicholas are 3 brothers, and the following statements about them are all true. Joseph is not the youngest, Kevin is the oldest, Nicholas is not the oldest. Whose age is in between the other 2? The obvious options are Joseph, Kevin, and Nicholas. Okay, ink color I will change, don't worry. Okay, I am getting the answers as Joseph. Somebody is saying Nicholas also. Joseph, 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 Nicholas, Joseph, 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 Nicholas. Whose age is in between the other 2? Okay, most of you are saying Joseph, and that's correct answer. Misha, it is not Nicholas. Question is asking about the person whose age is in between the other 2. Because oldest is already told, and he is also not the youngest. That's why Joseph. Yes, Vanshika, good. That's correct. Let's see here. So it says that Joseph, Kevin, and Nicholas are 3 brothers, and the statements about them are true. So these are 3 brothers, and we need to arrange them according to their ages, right? So someone will be oldest. Let me write oldest. I hope this color is visible now. And someone would be youngest. And there will be in between a person, right? Let's make a slide table like this. See, making a table is also very important. So how we are solving the question, although it is very easy question, you may not need to draw a table, but drawing table is very important. Over a period of about, as I already mentioned, 2 decades of teaching, I have understood. Earlier, I also used to write just numbers and done. But then I understood that making table, making lines is very important. Why? Because if you are not sure about anything, you can use the corners to write the possibilities. There are many uses. If you don't draw lines, sometimes what you were thinking generally mixes up in other lines also. So it's very, very important, draw the lines. Okay, move further. Now Joseph is not the youngest. So Joseph is not the youngest. So Joseph will come either here or here, right? Because Joseph is not the youngest. Now Kevin is the oldest, that's sure. Kevin is the oldest, that's given. So oldest is certainly Kevin. So if Kevin is oldest, so of course Joseph will not be the oldest. So Joseph should come in between. We got the answer already, right? And let's see the last statement also. Nicholas is not the oldest. That's obvious. So Nicholas is the youngest. So that's the order, and the question which it was asking about, whose age is in between the other 2, certainly it is Joseph. Clear? Yes, only by the first 2 statements, Shri Harsha, that's correct. Only by the first 2 statements we could have solved it. पहली दोनों statements से ही हम इसको solve कर सकते थे. Ready for the next question? Okay, here is the next question. Alex ranked 9th from the top and 38th from the bottom in a class. How many students are there in the class? Answer please.
Try to maintain the accuracy. That's my only request to all of you. Try to maintain the accuracy. गलत नहीं करना है. You can take time, no problem. But your answer must be correct. I'm getting the answers by Megomig says 46, Yash Saxena 46, Akshay 46, 46, 46, 46. Many of you are saying 46. In between some 45 also I'm able to see. 44 also. Think again, I'm giving you time. 44, 45, 46, 42, all options are here. Answer is going to be only one of them. Okay, I think that's sufficient time. So 46 is the correct answer. Yes, Abhay, that's correct. 38th or 9th is the same place. Yes. Somebody is writing Subrajit, 38 plus 9 minus 1. Yes, many of you are writing that. That's correct. Good. So 46 is the right answer. And those who are still not getting, see how we are to do it. Alex ranked 9th from the top and 38 from the bottom in a class. तो एक क्लास में एलेक्स नाम का बच्चा है, there is a student named Alex, and वो टॉप से 9th पोजीशन पे है. ठीक है, टॉप से 9th पोजीशन पे है. तो कैन यू टेल मी कि उससे ऊपर या उससे आगे कितने बच्चे होंगे? वो पर्सन 9th स्टूडेंट पे है, एलेक्स जो है वो 9th पोजीशन पे है, तो उससे पहले कितने बच्चे होंगे? Certainly 8, right? Because Alex is at 9th position. Alex is at 9th position. Alex is 9th. तो उससे पहले कोई 8th होगा, 7th होगा, 6th होगा, and so on up to 1 तक, isn't it? So there are 8 students ahead of this student Alex, isn't it? Right. Now, and another statement says that he is 38th from the bottom. तो bottom से वो 38th position पे है, right? तो bottom से वो 38th position पे है. Bottom से जो भी last, second last and so on. तो bottom से first, second, third, fourth, this is 38. Bottom से if I'm saying bottom से first, second, third, fourth up to 38, right? तो bottom से वो 38th position पे है. Bottom से कोई 37th position पे भी रहा होगा and so on, right? So ये 9th position from top and 38th position from last, that is same position. If you are simply adding 9 and 38, in that case we need to subtract 1, as many of you have done. Otherwise we could have done like this also कि ये नीचे से तो 38 लोग हैं, right? Alex is at 38th position from bottom and उससे आगे 8 persons, 8 लोग और भी थे. तो I can say the answer is going to be total number of students is 38 plus 8, that is 46. Right? That's one of the ways. Otherwise, I could have said it like this also कि Alex के पीछे कितने लोग और हैं? 37, isn't it? There are 37 persons behind Alex, or Alex was at the 9th position from top. So total students are 37 plus 9, which is again same, 46. And another way of thinking, as we have already discussed, कि just 38 plus 9 minus 1. Right? So 38 plus 9 minus 1, that is 46. So basically point is that our thinking must be very clear. We are not going to mug up or rot any of the formula कि इसमें ऐसा करते हैं this plus this minus 1. नहीं, रट्टा नहीं मारना है, because it will be very easily flawed. The moment I change a little bit situation, so maybe we cannot use this result always 38 plus 9 minus 1. So we need to think it clearly. I hope it is clear to everyone. Let's move further now. Am I audible? I'm seeing the chat box is still now. Akriti, I have just explained. Is it clear or any doubt? Till this point, if there is any doubt, you can ask me. Akriti, is your query solved? Thanks for confirming that I'm audible.
Akriti, I'm waiting for your comment if you are there. Anyway, let me repeat. There may be some more students who are bit doubtful. See, what we did, हमने सिर्फ इतना ही किया है. It is given that Alex ranked 9th from top. Alex टॉप से 9th पोजीशन पे है. टॉप से 9th पोजीशन होने का मतलब क्या है कि एलेक्स से ऊपर या एलेक्स से आगे पोजीशन वाले देयर आर 8 मोर स्टूडेंट्स, राइट? Is this clear? Right? And you have mentioned it already. And also Alex is 38 from the bottom. तो bottom से अगर हम count कर रहे हैं तो first, second, third, fourth up to 38. So Alex is ranking 38 from bottom. That means Alex से नीचे कितने हो रहे हैं या Alex से पीछे कितने हो रहे हैं? 37. तो we could have said 37 plus 8 plus 1. Right? 37 plus 8 plus 1. 37 एलेक्स से पीछे हैं, 8 एलेक्स से आगे हैं, एंड एक एलेक्स खुद भी तो है, राइट? So we have 37 students behind and 8 students ahead. So then 37 plus 8 will be 45. That's correct, Riya, but why are you forgetting that person Alex? आप एलेक्स को क्यों भूल रही हो? +1 भी करना होगा ना? अब ये blue is not visible. Okay, I can change it to black also, no problem. Okay, let's move further. Riya, is it okay? 37 plus 8 plus 1 also. Yes, good. Thanks. Let's move further now. Now, next question. Please try to answer it fast. I'm reading it for you. There are 2 girls I can see here. It's Kylie, and behold, I'm Inara. So one of the women above is named Kylie and other is named Inara. They each make a statement about who they are as shown. So we know that at least one of them is lying. Now be very careful about this. At least one of them is lying. So what color is Inara's dress? That's the question. I'm waiting for your answers. Okay, Megamic says white. Jay says white. Shravani, Shivi, Rushita, Vanshika. Okay, this time everyone is saying white so far. Okay, no prize for guessing. So this is certainly white. So there should not be any doubt. Obviously, both the women here are the liars. Akshay is saying, I'm not sure. Vivek is saying, nahi samajh mein aaya, don't understand. Color blind, Akshay is saying. See, we can see the white dress and the black dress, right? This girl, this woman is wearing a white dress and this one is a black dress. Now this person, this woman is saying I'm Kylie and this one is saying I'm Inara, है ना? तो अभी करना क्या है, कैसे करें? Can't be determined. I'm also able to see. Let's see here. That both of them are saying their name. ये बोल रही है मैं Inara हूँ, ये बोल रही है I'm Kylie, ना? Now it says that we know that at least one of them is lying. See, in the questions, what we need to take care about, हमें किस बात का ध्यान रखना होता है? जो डाटा गिवन है उसको हमें सही मान के ही काम करना होता है. Whatever is given, we need to take that into consideration. So here it is given that at least one of them is lying. तो इनमें से, इन दोनों में से कम कोई ना कोई एक तो झूठ बोल रही है पक्का, है ना? Minimum one is certainly lying. Maybe both are lying, right? तो at least one is lying. At least one of them is lying. तो मान लेते हैं, अब इसमें से कौन झूठ बोल रहा है मालूम नहीं. Let's try. अगर this girl, ये मैं ऐसा लिखता हूं, this white girl and white dressed girl and black dressed girl. Let's again make a table. तो this white dressed girl is saying that I'm Kylie. Let's say ये झूठ बोल रही है. This girl is telling lie. Okay? तो अगर ये lie कर रही है, that means she is not Kylie then, right? तो अगर ये Kylie नहीं तो कौन है ये? This must be Inara, right? It must be Inara. और अगर ये Inara है
तो दैट मीन्स दिस गर्ल इज हु इज सेइंग आई एम इनारा, शी मस्ट ऑल्सो बी लायर, तो ये भी झूठ बोल रही है। इट मीन्स ये इनारा नहीं है, तो फिर ये कौन है? ये कायली है। आर यू गेटिंग इट? यस यस मीमांशा, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हाउ टू नो कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, कैसे पता लगेगा? सो वी आर टू टेक द केसेस, या तो ये व्हाइट वाली झूठ बोल रही है, या ये ब्लैक ड्रेस वाली झूठ बोल रही है, या मे बी दोनों झूठ बोल रही है, राइट? सो आई स्टार्टेड विद लेट्स से दिस व्हाइट ड्रेस वाली को मैंने मान लिया कि लेट्स से दिस गर्ल इज दिस वुमन इज टेलिंग अ लाई। तो अगर ये झूठ बोल रही है, इट मींस दिस गर्ल इज नॉट कायली, राइट? और अगर ये कायली नहीं है तो ये कौन है? It must be Inara because it is given that one of the women above is named Kylie and other is Inara. ये बात हमें मालूम है कि ये दो ही लोगों की बात हो रही है, one of them is Kylie and other is Inara. तो अगर ये झूठ बोल रही है she is not Kylie then she must be Inara, right? और अगर अब ये Inara है, ये white वाली अगर Inara है, तो ये black वाली तो Inara नहीं हो सकती, this must be Kylie, but she is saying I am Inara, it means ये भी झूठ बोल रही है, right? And she is Kylie. Right? So I could have started from that girl also. So result एक ही आने वाला था. Understood? Okay, this was easy one. This was not tough. Brain freezing, you are considering it? Okay, these were just warm-up questions. Now we are going to move to the next ones. So I hope this one is clear now. ऐसे क्वेश्चंस ये टेबल ड्रॉ करके ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं डायरेक्टली आंसर बताने से, डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। यस श्री पूजिता, यस दे कैन बी आंसर डायरेक्टली, बट व्हाट वी आर थिंकिंग एज आई सेड यू अर्लियर आल्सो कि इनिशियली आई वाज आल्सो दैट थॉट प्रोसेस ओनली कि ऐसे ही कर सकते हैं ना, इसके लिए क्या टेबल बनाना है। बट एज आई सेड अर्लियर दैट मेकिंग टेबल मेक्स द थिंग मोर क्लियर, इट मेक्स इट मोर क्लियर फॉर योरसेल्फ, आपके खुद के लिए भी इजी हो जाएगा समझना, रीचेक करना, and it will be easier for you to explain to someone also. So making table is a good habit, it's a good habit, we should try to develop it. I know it is tough, लगता है ऐसे ही solve हो गया तो क्या जरूरत है, but it is better. Yes, both are lying, Akshay, that's correct. Okay, let's move further now. So obviously here answer would be what color is Inara's dress? So Inara is this one who was saying Kylie, and her dress is white, as we have deduced here in this table also. ठीक है? So अगर आपने अभी तक के सभी क्वेश्चन सही आंसर किए हैं, है ना? So now that means your brain has started working, it is in running mode, and we are going to take it further. ठीक है? आगे चलें. राइट, दिमाग तो फ्रीज, हाँ अब आगे फ्रीज नहीं करने वाले, डोंट वरी जिम, हम दिमाग को फ्रीज नहीं करेंगे, अब आपके फ्रीज दिमाग को हम जो है रनिंग बनाने वाले हैं। ओके, मूव फर्दर नाउ। सो एज आई सेड अर्लियर, अगर आपने अभी तक के जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए हैं, सो यू कैन ऑल्सो बी अमंग द कैट टॉपर्स in next year, that is 2024. Yes, Shri Harsha, solving this is not typical, but while solving cat sets, it's really tough. So as we have many statements for a single set, how to make them aligned and solved. Yes, good point, Manisha. That's why I'm saying that making tables is always a good way, and we are just beginning to think कि सोचना कैसे है, राइट? तो सोचने का सही प्रोसेस अगर हम डेवलप कर लेंगे तो वी कैन सॉल्व एनी लार्ज क्वेश्चन, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. Okay, so as I said, if you have answered all these questions correctly, so you can also be one of the CAT 2024 toppers, and this is a result of our this year CAT, and it surpasses all years record, and certainly it must be a good record for at least all the online coachings as well as the offline ones also. So 200 plus 99 percentile from iQuanta, and you can see the different grades, 99.9 percentile, they are 16, 99.8, 28 and so on. So if you also want to be among this, so it's not very difficult, okay, it's not very difficult. Let's move further, and specifically see for extremely weak in CAT quants, so specifically for these persons who consider themselves extremely weak, हमने last time भी ये बात की थी,
तो जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत वीक हूं, बट यू आर नॉट दैट, सो iQuanta is here with its new non-engineer module. So this time we have started this स्पेशल नॉन इंजीनियर मॉड्यूल. सो उसमें करने क्या वाले हैं, दे विल बी बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोज कवरिंग 6th to 10th NCERT मैथ इन कैट 2024 फुल कोर्स बैच. तो जो भी कैट 2024 का हमारा फुल कोर्स है, तो उसमें दे विल बी सम बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोज बेस्ड ऑन द 6th to 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ. सी, मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि 10th तक का मैथ इज कंपल्सरी. 10th के बाद आपने मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सो दैट डज नॉट हैम्पर योर एंट्री इनटू आईआईएम. तो आईआईएम में जाने के लिए 10th के बाद का मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज 10th के बाद का मैथ्स यू कैन थिंक इट लॉजिकली ऑल्सो. 10th के बाद का मैथ्स आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, दैट्स ऑप्शनल फॉर यू, राइट. In graduation you are taking maths or not, that's optional for you. And CAT is common admission test for all graduation streams, right? So it does not look that you have taken maths in 11th and 12th or graduation, right? So till 10th, whatever mathematics you have studied, all of you have studied, you must be expert in that. जनरली सी दिस अ कॉमन सेंस. 10th के बाद मैथ कौन लोग नहीं लेते हैं जिनकी हालत 10th तक भी खराब ही होती है, राइट. सो व्हाट एवर ऑब्जेक्टिव इज कि 10th तक का मैथ अच्छा कर लो, 10th तक का थॉट प्रोसेस अच्छा कर लो, देन यू विल बी इजीली एबल टू कवर ऑल द थिंग्स, राइट. सो दैट्स द होल पार्ट. सो देयर विल बी स्पेशल दिस न्यू नॉन इंजीनियर मॉड्यूल. इसमें क्या क्या होने वाला है, सो देयर विल बी एवरी टॉपिक ऑफ क्वांट विल बी taught from very basics. So बिल्कुल बेसिक चीजों से चलते हुए हम उसको कैट लेवल तक, ऐसा वन ऑफ यू वर मेंशनिंग कि जो कैट के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, लेंथी क्वेश्चंस भी हमें लगते हैं, सो विल बी रीचिंग अप टू दैट पार्ट. You will be able to do them very easily. And beside that, this is specifically for non-engineers, and of course engineers can also take benefit from this. And उसके अलावा जो समझते हैं कि हमारे बेसिक्स अच्छे हैं, so उनके लिए specifically, so regular practice sessions with 24/7 doubt clarification. So that's already going on. So all these things will be there. So basically, whether you are from engineering background or you are from non-engineering background, if you consider yourself good in quants or good in maths part, or you consider yourself extremely weak, so whatever be the case, so this is the right place for you. Okay, and this is non-engineer CAT module. This is already mentioned, and this is the team, all men in black here. Let's move further. Now we are going to have some difficult level questions, some slightly, not very, but slightly high level. So ready to use your brains, smart brains. रिमझिम बोल रही है फिर भी इंजीनियर फोकस्ड है कैट. कैट इंजीनियर फोकस नहीं है बच्चे. हमारा जो माइंड है ना, वो काम करना नहीं चाहता है. सी, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, आई वाज टीचिंग इन ए क्लास, एंड इन दैट क्लास मोस्टली स्टूडेंट्स वर इंजीनियर्स. आईआईटी दिल्ली के बच्चे थे बहुत सारे, और उसमें एक बच्चा था जो कि आगरा का था. एंड आफ्टर गेटिंग टू नो, मुझे पता चला कि वो बीए का स्टूडेंट है. And he was always answering much faster and with accuracy than IIT Delhi students. IIT Delhi वाले वो बच्चे नहीं कर पा रहे थे जितना वो अच्छा कर पा रहा था. So it doesn't matter कि कोई IIT का है या engineering background का है. That doesn't matter at all. That doesn't matter at all. What matters is only your logical thinking. Are you able to think or not? That's what is required. It's not that हर कोई जो इंजीनियर बन गया है या बन रहा है वो ज़्यादा स्मार्ट ही होता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो moving to slightly better category now. The school nurse is recording the heights of 5 students in a class. When comparing their heights, the students find that Alex is taller than Brian but shorter than Charlie. Daniel is taller than Edward but shorter than Alex. Who is the tallest? Try to answer it fast. दीक्षा इज आस्किंग, सर जिनके 2 आंसर्स ठीक हुए हैं अभी तक, वो कैट 24 के टॉपर्स नहीं होंगे? नहीं हो सकते हैं बेटा, अब आगे सही करो, है ना. अगर गलतियां करते रहोगे तो देन इट इज डाउटफुल. आई हैव स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स. चार्ली 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 चार्ली.
गुड, मैनी ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर. आई हैव नॉट सीन इवन ए सिंगल, एक भी अलग आंसर नहीं देखने को मिल रहा है. आई एम सीइंग ओनली चार्ली इन माय चैट बॉक्स. Oh, some of you are writing, Yash is writing the complete order also. Complete order I think नहीं बना पाएंगे यश. 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है यश. I can see. Aditi is asking when will conceptual classes start? So you can contact our admission team, Aditi. These classes are also part of that only. अनीशा बोल रही है मेरा माइंड तो मैथ्स देखकर काम करना ही बंद हो जाता है अगर समझ भी आ जाए, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठो तो भूल जाते हैं. बिल्कुल, मैं चाहता ही नहीं कि आप कुछ याद रखो जो भूलना पड़े. दैट्स व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज. हमें कुछ याद नहीं रखना, दिमाग को यूज करना है बस. CADBE, CABD, some of you are writing the order, complete order. So complete order cannot be determined. हाँ, यस, ऑर्डर में केसेस बनेंगे. रिमजन, दैट्स करेक्ट. ओके, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन नाउ कि कैसे सॉल्व करना है. मैनी ऑफ यू आर राइटिंग चार्ली. नाउ सी हियर, मैं फिर से टेबल बनाना चाहूंगा. ओके, बट नॉट राइटिंग द टेबल, वी आर नॉट हैविंग मच स्पेस हियर. सो एलेक्स इज टॉलर देन ब्रायन बट शॉर्टर देन चार्ली. सी, रैंडमली थोड़ा सा एक रफ टेबल बनाते हैं. लेट्स से मैं ऊपर लिखूंगा टॉलेस्ट, या taller persons are on the top of this table and shorter persons will be at the bottom. ठीक है, चलेगा. Okay, now first statement says Alex is taller than Brian. तो Alex इस टेबल में ऊपर आएगा Brian से because Alex is taller than Brian, right? तो A जहां भी आएगा A के नीचे B आना चाहिए, right? Because Alex is taller than Brian but shorter than Charlie. कौन शॉर्टर है चार्ली से? एलेक्स के बारे में ही बात हो रही है, राइट? तो एलेक्स के बारे में बताया कि वो ब्रायन से तो टॉलर है बट शॉर्टर है चार्ली से. तो एलेक्स इज शॉर्टर देन चार्ली. तो चार्ली इज टॉलर देन एलेक्स, राइट? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट टेल्स अस अबाउट दिस ऑर्डर CAB. आई होप दिस इज, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट हियर. ठीक है ना? दिस इज CAB. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, दिस इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट, दैट्स इट. तो डैनियल इज टॉलर देन एडवर्ड. तो D इज टॉलर देन E. तो अलग से लिख लेता हूं. तो D जो है इज टॉलर देन E. E उसके नीचे आएगा कहीं ना कहीं, right? Because D is taller, D in this table, D will come at the top and E will be below it because D is David is taller. Daniel is taller than Edward, but again D के बारे में बात हो रही है, but shorter than Alex. लेकिन अब ये D जो है छोटा है किससे? एलेक्स से. सो ये एलेक्स के नीचे फिट होगा ना. सो दिस DE, दिस कॉम्बिनेशन विल फिट समवेयर बिलो A से कहीं ना कहीं नीचे आने वाला है, राइट? तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हु इज द टॉलेस्ट. क्लियरली C इज द टॉलेस्ट, देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट दैट. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट ऑर्डर, तब काफी सारी चीजें पॉसिबल है ना. Yes, we can say, Akshay is saying, we can say Charlie is the tallest and Alex is second tallest. Wonderful, but not the order of other students. That's correct, Akshay. Rimjim is saying, me who did this by making arrows different heights only. Arrows is okay, no problem beta. But point is that कि हमें लिख लेना चाहिए और लिखने का सही तरीका यूज करना चाहिए. So what can be the orders? Of course, answer we have got. So who is the tallest? It is certainly Charlie, as Akshay mentioned. So Charlie is the tallest and second tallest is certainly this A, that is Alex. So order अगर हम देखेंगे तो CA, अब A के नीचे D और E को आना है, राइट? तो इट इज पॉसिबल कि D और E दोनों B से ऊपर ही आ जाएं. तो मे बी D, E, B ऐसा हो सकता है. दिस इज वन पॉसिबल ऑर्डर, इजंट इट? एंड C और A तो टॉप पे आने ही हैं, और ऐसा हो सकता है कि D B से ऊपर आए बट E नीचे आ जाए. तो D B E is also a possible order, isn't it? And there is one more possible order that D और E दोनों ही B से नीचे आए. That is C A B D E. So these are the three possible orders of the heights of these 5 persons. तो इन पांचों लोगों के
हाइट्स के ये अलग अलग ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, एज्यूमिंग कि सभी की हाइट अलग अलग ही है. देयर कैन बी सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें कुछ लोगों की हाइट सेम भी हो सकती हो, राइट. इन दिस केस अगर हम बात करेंगे तो कैन यू टेल मी इनमें से, इन पांचों में से किन की हाइट सेम हो सकती है? Ankit, that's correct. Less than greater than equation, that's correct. That's same thing. चल मी इन पांच लोगों में से अगर दो लोगों की एज सेम हो सकती है तो किन की सेम हो सकती है? प्लीज राइट इन द कमेंट. यस, दैट्स करेक्ट. गुड. बी एंड डी. यस अरिजीत, दैट्स एन इजी क्वेश्चन. यू कैन डू इट ओरली ऑल्सो. नो इशू इन दैट. नो इशू. कैट ऐसा नहीं बोल रहा है कि टेबल ही बना के सॉल्व करो या लिखकर ही सॉल्व करो. Because question is smaller, so you can do it mentally also, orally also, or writing very briefly also. But the point is that to develop a right habit so that we can tackle any large question also. Yes, B and D can have same age also, because C is certainly greater than A and D is certainly younger than shorter than A and E is also shorter than D. तो D की age, D की height B के बराबर हो सकती है, right? डी की हाइट बी के बराबर हो सकती है. और किसी की भी हाइट बराबर हो सकती है क्या? और किसी की भी हाइट बराबर हो सकती है क्या? आई कैन सी वन कमेंट बाय प्रणवी. दैट्स करेक्ट प्रणवी. बी एंड डी कैन हैव सेम हाइट और बी एंड ई ऑल्सो कैन हैव सेम हाइट. सो देयर आर टू पेयर्स. यस, सोहम इज ऑल्सो राइटिंग सेम थिंग. बी एंड ई ऑल्सो. गुड. So, but these three orders which I have written here, they are just assuming that everyone has got different heights. By the way, it was not given here. So, and that was not asked also. ये पूछा भी नहीं गया था, सिर्फ यही पूछा गया था. Who is the tallest? And there is no dispute about that. The tallest one is certainly Charlie. Clear? Can we move further now? Should we move further? Okay. So now we are moving to the next variety of questions. So it's a little more tricky. It's a number puzzle now. Aryan is asking, sir, D is taller than E. Yes, D is taller than E, that's fine. Then how can E and B be of same height? भैया आर्यन, D is taller than E, बट ऐसा थोड़े ना बोला है कि B की हाइट जो है वो किसके बराबर है कि नहीं है. B may be equal to height of D, B may be equal to height of E also. जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, if D is taller than B, तो A के बाद D और D के बाद B, but B and E may be having same heights. That's possible, right? That's a possibility. ओके, रिमझिम इस बुकलेट मिलता है. कैट में बुकलेट कहां से आया भाई? ओके, आई एम मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नाउ. वी हैव लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस टू डिस्कस एंड टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट. एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज क्रैक द कोड. दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल नंबर पजल व्हिच आई लाइक रियली वेरी मच. एंड द बेसिक पॉइंट इज कि सोचना कैसे है ना. तो इस सोचने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस हमें काफी जगहों पे मिलते हैं, काफी क्वेश्चंस मिलते हैं. दीज क्वेश्चंस आई हैव पिक्ड फ्रॉम वेरियस online sources only. I have not created this. So, but they are wonderful tricky questions, and similar questions have appeared in CAT, LRDI, sometime in Quant also. So, how to go about this question? First, try to understand यहाँ पे क्या पूछ रहा है. It says we are to crack the code. So, we are to find a 3-digit code here. ठीक है, ये हमें 3 digits का code find out करना है. And these are some of the clues given. ठीक है, ये कुछ क्लूज हैं और उनके रिमार्क्स यहां पे लिखे हैं कि अबाउट दीज 3 नंबर्स, 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड. हाँ, यस, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि इसमें क्या करना है. तो वी आर टू फाइंड आउट द 3-digit कोड हियर. दिस 3-digit कोड कैन हैव एनी 3 digits हियर. सो व्हाट आर द 3 digits हियर? यहां पर कौन से 3 digits आने वाले हैं? दैट्स व्हाट वी आर टू आइडेंटिफाई. और उसके लिए ये हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं. ठीक है, तो कैसे करना है? एक क्वेश्चन हम ये साथ में कर रहे हैं. सो बी विद मी. सो दिस फर्स्ट क्लू हैज अ रिमार्क दैट 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड. मतलब इन तीनों में से
केवल एक ही नंबर है जो सही है, राइट, मे बी 6 है या 8 है या 2, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इन तीनों में से एक ही नंबर है जो सही है, एंड वेल प्लेस्ड ऑल्सो। वेल प्लेस्ड का क्या मतलब है कि वो सही जगह पे भी है। ऐसा भी हो सकता था कि रॉन्ग प्लेस पे हो, यस। आगे है ना, लाइक लेट्स सी द लास्ट वन ओनली फॉर 780, सो वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस, राइट। तो इन तीनों में से एक ही नंबर सही है बट वो रॉन्ग प्लेस पे है, गलत प्लेस पे है। इसका क्या मतलब हुआ, मे बी अगर 7 इज द करेक्ट डिजिट, ये सही डिजिट है, वन नंबर इज करेक्ट बट इट इज एट रॉन्ग प्लेस, मतलब कि ये एक्चुअली इसकी पोजीशन ये सही नहीं है, इट मस्ट बी एट द वंस प्लेस और मे बी टेंस प्लेस, बट दिस प्लेस इज नॉट करेक्ट, राइट। दिस इज, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. So to make it more simpler, I'm started getting answers also. 206, 862 different answers are there. Let's think. These are not correct. These are not correct, by the way. You can keep on looking, but we are solving it together. तो जिन लोगों को already they are familiar with this question, so they are trying their answers. 062 is also not correct, Sahasra. You keep on working. Okay. For all others, be very careful. सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिमार्क्स हियर, अलग अलग तरीके के यहाँ पे रिमार्क्स हैं कि नंबर करेक्ट है तो या तो सही प्लेस पे है, वेल प्लेस, और इट इज एट रॉन्ग प्लेस, और या तीसरा क्या हो सकता है कि करेक्ट है ही नहीं, नंबर करेक्ट ही नहीं है. ओनली दीज थ्री टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. सो वी आर स्टिल गेटिंग डिफरेंट आंसर्स. आई एम नॉट लुकिंग एट द आंसर्स येट. तो अब मैं देखो क्या करता हूं, तो इसको समझने के लिए ये जो तीन तरह के रिमार्क्स हैं इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं, है ना. सो तीन तरह के रिमार्क्स क्या क्या थे, आई एम राइटिंग इट अगेन. वन थिंग इज कि वन नंबर इज करेक्ट, नंबर इज करेक्ट, सो लेट्स कॉल इट सी. ठीक है, इज इट विजिबल? सर नंबर इज करेक्ट तो उसको हम सी बोल देंगे इफ इट इज वेल प्लेस्ड ऑल्सो. एंड नंबर इज करेक्ट बट इट इज रॉन्गली प्लेस्ड, तो आई विल डिनोट इट बाय डब्ल्यू, राइट. नंबर इज करेक्ट बट इट इज रॉन्गली प्लेस्ड, गलत जगह पे नंबर लिखा है, तो वी विल कॉल इट डब्ल्यू. And if number is not there, if that number is not there in the actual code, so we will denote it by n. So we have made this denotation here, C, W and n. यहां तक की बात समझ में आई है? I'm repeating, let me repeat. So अभी भी अलग अलग आंसर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं. 620, 662, 602, 102, 021. Wait, don't hurry. We'll go together. Oh, still Himanvita 062, 862. No correct answer yet. No correct answer yet. There are more than 200 students, but not a correct answer yet. Don't worry. I think I have got the right answer now. I won't disclose it. Wait, I won't disclose it. See, so I'm repeating. So I have taken this denotation here that C refers to a digit which is correct and well placed also, and W refers to a digit which is correct but wrongly placed, and N refers to a digit which is not there at all. ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं. हाँ, इसको हम यूज करने वाले हैं शॉर्ट में, अदरवाइज सारा लिखना बार बार मुश्किल होगा. इसको हम सारा यूज करने वाले हैं. सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद दिस गेस हियर, दिस क्लू. तो इट सेज नथिंग इज करेक्ट, कि इनमें से कुछ सही नहीं है. दैट मींस ये तीनों डिजिट्स गलत है ना, तीनों डिजिट्स ही रॉन्ग है, नहीं आएंगे, तीनों ही n है, तो आई कैन राइट इट एज n. दैट मींस इट विल नॉट बी यूज्ड इन द एक्चुअल कोड एनीवेयर. इज इट क्लियर सो फार? यहां तक की बात समझ में आ गई है? इज दिस पॉइंट क्लियर? See, I'm not just looking for the answers. I want that everyone, each of the 200 plus students must understand this, how to solve and how to use brain. Some of you are trying the answers and writing them also in the chat, and some of you have got it correctly also now. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको सीखें. यहां तक की बात समझ में आई है? So we have made this denotation here, CWN. C refers to a digit which is correct and well placed also. It is placed correctly. And W refers to a digit or number which is correct but wrongly placed. And N for the number which is not correct, which is not to be used. यहां तक की बात ठीक है. गुड. सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्लू बिकॉज यहां पे लिखा है नथिंग इज करेक्ट, तो सर्टेनली ये तीनों ही डिजिट्स गलत हैं, राइट. तो n, तो मतलब 7 तो उस कोड में आना ही नहीं है, राइट. सो नाउ हाउ टू गो फॉरवर्ड? सो वेरेवर आई सी 7 आई कैन पुट n देयर, तो 7 तो यूज होगा ही नहीं, तो 7 तो नहीं आएगा. 7 और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं.
3 जहां भी दिखे उसको n लिख सकते हैं, तो 3 इज नोवेयर एल्स. 8 जहां भी दिखे उसको n लिख सकते हैं, सो 8 इज हियर, सो 8 विल नॉट बी यूज. 8 इज n. 8 यहां भी है, तो 8 विल नॉट बी यूज. टिल दिस पॉइंट इज इट ओके? टिल दिस पॉइंट इज इट ओके? गुड. ठीक है. सो दिस क्लू वी हैव यूज्ड एंड वी हैव यूज्ड दिस रिमार्क आल्सो, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा वो भी हमने लिख लिया है. नाउ आई थिंक यहां पे हम 2n लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड. यहां पे बोल रहा है वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस, दैट मींस w. तो ये तो n आ चुके हैं, तो दिस मस्ट बी द w, इजंट इट? So far we have got the one digit that 0 will be used in this actual code. Many of you have started getting the right answers now. That's good. So 0 will certainly be used, but this is the wrong place for 0. Right? Let's move further now. Let's move further. So 0 will be used, and I can see 0 here also. Right? And यहाँ पे लिखा है 2 numbers are correct but wrong place. That means WW. There should be 2 W's and 1 N, of course. तो 0 will be used, but it is also wrong place, isn't it? तो 0 के लिए ये भी wrong place है. राइट, जीरो के लिए ये भी रॉन्ग प्लेस है. अगर जीरो के लिए ये रॉन्ग प्लेस है, दैट मींस जीरो वंस प्लेस में नहीं आएगा, जीरो टेंस प्लेस पे नहीं आएगा, तो जीरो कहां आएगा? जीरो विल सर्टेनली कम एट द हंड्रेड्स प्लेस. इज दिस पॉइंट क्लियर? व्हाई वी आर नॉट राइटिंग 738? इट्स गिवन बेटा, इट्स रिटन दैट नथिंग इज करेक्ट हियर. अनीशा, इट्स मेंशन्ड हियर दैट इन दिस क्लू, in this guess, in a way, nothing is correct. That means ना तो 7 यूज होगा, ना 3 यूज होगा, ना 8 यूज होगा. That's from where we have started. यहीं से हमने स्टार्ट किया है. ओके, तो यहां से अभी हमें मिला कि 0 will come at this hundreds place. Let's move further now. अभी हमारे पास ये काफी सारे क्लूज देखने बाकी हैं. So I think I will go with the first one now. यहां पे बोल रहा है ये 8 तो नहीं यूज होगा, 6 और 2 में से now one number is correct and well placed. ठीक है, one number is correct and well placed. कैन यू टेल मी कि वो नंबर अब कौन सा होगा जो सही प्लेस पे भी है? कैन इट बी 6? कैन इट बी 6? सर्टेनली नॉट, है ना. ध्यान से देखो क्यों नहीं होगा 6. 6 सी, इन दोनों में से अब जो भी एक नंबर यूज होने वाला है दैट मस्ट बी सी, दैट मस्ट बी एट द करेक्ट प्लेस ऑल्सो. तो अगर 6 को मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि ये करेक्ट प्लेस पे होगा, बट ये वाला प्लेस तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ना 0 के द्वारा, तो this 6 certainly cannot be at the correct place. This is certainly N, and this 2 must be C, right? 6 cannot be C. 6 has to be N, so this 2 will be C. So 2 is the correct number and the correct place. तो 6 जहां भी दिखे उसको मैं N लिख सकता हूं. तो 6 इसको हटा दिया, 6 इसको भी हटा दिया. Alright? And this C is for 2. That means 2 will come at the last place. Good. So far we have identified the 2 digits here in the code, that is 0 and 2 at the last place. So 2 is correct here. Now we are left with only these two part, and 2 we know that it is correct, but this is a wrong place for 2 now. 2 numbers are correct but wrong place. So this is certainly wrong place that we have used already. अब आखिरी काम बचा है. In this 614, 6 तो नहीं आने वाला है. Out of this 1 and 4, one number is correct but wrong placed. Can you think now? One number is correct but wrong place. Yes, अभय सिंह तोमर सबसे पहले लिखा तब मैंने 042. I saw that, अभय. So 1 and 4. Now one number is correct but wrong place. See, मेरा जो नंबर बचा है वो इस मिडिल प्लेस पे या टेंस प्लेस पे बचा है. तो यहां पर ये 1 आएगा या 4 आएगा? आप सोच के बताएं. क्या 1 आ सकता है यहां पे? इफ अगर मैं 1 को यहां पे लिखता, in that case this 1 must be the correct number and well placed also, but it is not well placed, it is wrongly placed, right? So यहां पे हमें C वाला नंबर नहीं मिलना है, यहां से हमें W वाला नंबर मिलना है. तो this is certainly N and this is the W. So this number is to be used, and but it is wrongly placed here. So certainly answer is 042. I hope it is clear and I'm sure इसने आपका बहुत दिमाग लगवाया है. Interesting? Yes, Harshay, that's correct. So 1 was already at the middle place. तो अगर 1 को ही यहां पे आना होता तो in that case 1 must be the correct number and well placed, but it is wrong place. That's why. हाँ, यश, good.
सो समझ में आ गया है और अब इसकी प्रैक्टिस करके स्पीड लानी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो यस, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, आई हैव टेकन गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू डिस्कस दिस। तो अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अभी एक और सवाल दे रहा हूं और ये अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सॉल्व इट। मजा आ गया, वेरी वेल एक्सप्लेन, इंटरेस्टिंग। What is the difficulty level of question? Don't worry about difficulty level, यश। 4 वाला नहीं समझ आया, आकृति से थिंक अगेन। वट एवर आई हैड टू से, मैंने बोला सारी बातें एंड आपने सब बातें सुनी हैं। नाउ ट्राई टू थिंक। हियर्स वन क्वेश्चन फॉर यू। ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग। नहीं अखिल, ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग नहीं, ब्रेन को कुछ एक स्पीड ब्रेकर मिला है जहां उसको सोचना पड़ रहा है। Gayatri, try this question. We will discuss it again. I'm giving you 2 minutes. Everyone, please try to answer this question now. And you can use the same notation CWN. That will make it easier. I think I have started getting answers also. See, that's the beauty of mathematics part, be it LR or DI or quant, whatever. कि whatever answer you are getting, you can always recheck whether it satisfies all the given conditions or not. ठीक है ना? So to develop accuracy, this is very important part. जो भी आप आंसर निकाल रहे हो, always recheck whether it satisfies all the given conditions. Just 1 more minute now. Majority of you are giving same answer, but still in between there are few different answers. Just last 1 minute is there. After that we will discuss. Okay, see here now. So most of you are saying 153 and in between some different answers are also there. Anyway, let's check it now. मुझे ये बताओ स्टार्ट कहां से करें? Which statement, किस स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए? कौन से क्लू से स्टार्ट करना चाहिए?
Yes, second, that's correct, Shravani. Why? Because as in the last question, यहां पर भी वही बात है कि second statement में लिखा है nothing is correct. That means we are sure about all the three digits कि इन तीनों में से कोई भी use नहीं होने वाला है. Let me change the color of my marker. I think red will be better suitable one. So this is n, this is also n, and this is also n, right? So 8 जहां भी लिखा है उसको हम हटा सकते हैं. So 8 तो नहीं यूज होगा नंबर में, 8 और कहीं नहीं दिख रहा. 4 जहां भी लिखा 4 और कहीं नहीं है, एंड 9, सो 9 भी नहीं यूज होगा हमारे कोड में, राइट? बढ़िया. नाउ डायरेक्टली वी कैन मूव टू द लास्ट स्टेटमेंट, बिकॉज यहां पे 2 के तो हमें रिमार्क्स मिल चुके हैं. 8 इज नॉट टू बी यूज, 9 इज नॉट टू बी यूज. अब यहां पे लिखा था 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस, दैट इज W, राइट? तो वो W कौन सा है? सर्टेनली 1, राइट? दैट मीन्स 1 विल बी यूज, लेकिन 1 उस लास्ट प्लेस पे नहीं आएगा या वंस प्लेस पे नहीं आएगा, है ना? 1 और कहां पे है? 1 इज हेयर इन दिस नंबर ऑल्सो इन दिस कोड. और यहां पे लिखा है 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेसेस. दैट मीन्स 1 के लिए ये प्लेस भी रॉन्ग है. सो दिस इज ऑल्सो W हेयर, इजंट इट? ठीक है ना? तो कैन यू आइडेंटिफाई कि 1 कहां पे आएगा? So certainly 1 will come at the hundreds place, right? 1 will not come at this last place or ones place. 1 will not come at tens place. So certainly 1 will be there at the hundreds place. This code will start with the digit 1, right? That's the first part. Okay? That's the first part. Let's move further now. What else we can do? If I see this first one, आप ही बताएं इसके बाद अब आगे कहां से कर सकते हैं? हाँ, हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है. वी हैव फिल्ड दिस वन एट द हंड्रेड्स प्लेस हियर, अक्षय. नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब किससे स्टार्ट करें? अब आगे कहां से बढ़ें? आई थिंक आई कैन गो विद द फर्स्ट वन ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट. हाँ, यहां तक समझ में आ गया ना यश? गुड. ओके, 793 स्टार्ट करना चाहिए. यस मैगोमिक, आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट. आपका नाम बड़ा अच्छा है, मैगोमिक. यस, फर्स्ट स्टेटमेंट लोकेश. सो फर्स्ट स्टेटमेंट से 793, तो 9 तो पक्का नहीं आने वाला है. अब 7 और 3 में से 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस, दैट इज 1 नंबर इज C. तो इनमें से एक C है, बचा हुआ N होगा. तो कैन दिस 7 बी C? क्या ये C हो सकता है क्या? लेट्स चेक. मान लेते हैं, अगर इसको मैंने C मान लिया, मैं एक बार C लिख रहा हूं. लेट मी चेंज द कलर. इसको एक बार मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूं. Now this is a possibility, तो आई एम नॉट श्योर ये ऐसा है कि नहीं है. तो कलर ब्लैक ही ले लेते हैं. सो इफ आई एम एज्यूमिंग दिस 7 टू बी C, या तो ये C है और ये N है, राइट? इसके अलावा हो सकता है कि ये C हो और ये N हो. डज इट मेक सेंस? यहां तक ये बात समझ में आती है? Right. Pranavi is asking something. When we check 7th place, we find it can't fit in. हाँ, yes, true Pranavi. So that's what we are seeing here. आप सही बोल रहे हो. तो अभी मैंने मान लिया कि या तो ये 7 जो है वो C है, तो 3N होगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि 3C हो और 7N हो. Let's take the first case first. तो अगर मैंने 7 को C लिया है, right? 7 को C लिया है, तो that is not possible ना. मैं क्या बात कर रहा हूं? Because 7 can't be C because this 100th place is already fixed. It is 1. Isn't it? This is already fixed. So 7 cannot be C. समझ में आ रहा है? 7 cannot be C because this place is already fixed. We have already found कि यहां पर तो 1 ही आने वाला है. ठीक है ना? So certainly this first case which I took 7 as C is not correct. Certainly 7 is N and 3 is C. That means 3 will come at the last place or ones place. और 7 तो N हो गया है, तो 7 जहां भी दिखे उसको मैं N लिख सकता हूं. यहां तक की बात समझ में आ गई है? इज इट क्लियर? पॉइंट होम. गुड गुड. लेट्स मूव फर्दर नाउ. तो ये फर्स्ट कोड यूज हो गया, सेकंड यूज हो गया. इस वाले में एक बचा है. यहां पे लिखा था 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेसेस. दैट मींस 2 W's आने चाहिए. एक W और एक N आ चुका है, तो बचा हुआ 3 कैसा होगा? Certainly it is going to be W, isn't it? It's going to be W. By the way, 3 तो हम पहले ही देख ही चुके हैं, so 3 is already there. So this is also done. Now we are left with this one statement only. और यहां पर लिखा है, second last clue में लिखा है that 1 number is correct but wrong placed.
दैट मीन्स इन दोनों में से एक को W होना है, राइट? इनमें से एक को W होना है। वो कौन W होगा, 2 या 5? आप बताइए, whether it will be 2 or 5. Akshay, yes, that's 7 we have already discussed. Now I am talking about this 2 or 5. इनमें से कौन W होगा? सी, यहां पे हमारा कोड में कौन सा नंबर बचा है? यस, इट मस्ट बी 5, दैट्स करेक्ट मैगोमिक श्रावणी। इन दिस केस वी आर लेफ्ट विद ओनली द मिडिल डिजिट और द टेंथ प्लेस डिजिट। तो टेंथ प्लेस डिजिट पे अगर 2 को ही लेकर जाना है तो 2 विल बिकम सी इन दैट केस, बट मुझे तो यहां पर W चाहिए था ना, तो 2 कैन नॉट बी W, सर्टेनली दिस 5 मस्ट बी W। इन दैट केस 2 इज गोइंग टू बी N, सो आंसर इज 153, राइट? Daniel, is it a hand raise for doubt or you have understood? Good, good. Most of you are understanding it. If there's any doubt, you can ask me. Should we move forward? आगे चलें? Understood. Wonderful. Thank you, Daniel. Excellent. ये कीर्ति भाई ये क्या बना दिया है? समझ में आ गया ना? Okay, okay. Let's move further. Want to practice more? लास्ट पार्ट, अविरल फिर से समझो बात को बेटा। लास्ट पार्ट में हमने क्या किया? लास्ट पार्ट इतना ही था ना? अरे ओ, आई हैव मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। लेट मी गो बैक। सो लास्ट पार्ट में केवल हमने इतना ही किया था अविरल, दैट अमंग दिस 2 and 5 which will come at the hundreds distance place and whatever the number will be there, जो भी नंबर होगा that must be W। अगर 2 को हम वहां पर लेकर जाते तो in that case 2 must be C, 2 करेक्ट प्लेस पे होना चाहिए था ना, बट हमें तो यहां पे रॉन्ग प्लेस वाला नंबर चाहिए, सो दैट्स व्हाई 5 इज दैट नंबर जो कि वहां पर आएगा और यहां पर वो रॉन्ग प्लेस पे है, दैट्स व्हाई वी चोज 5। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज ट्राई टू आंसर दिस फास्ट। यस रिमजिम, गुड, दिस टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग, नाइस। Quickly answer this now, we have lot more to do, lot more to do. Now this time no explanation, we'll only check the answers. Yashi, I have seen your answer, no need to repeat. If you're changing your answer, then you can. Acha, there are 2 persons, one is Yashi, one is Yash. Vivek, try to solve this one now, it will be clear. See, I have already told you, you are getting different answers. अभी भी कमेंट में, चैट में मुझे अलग अलग आंसर दिख रहे हैं. I have already told you that you can always recheck your answer. अब है सेम कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फर्स्ट रीचेक योर आंसर, check whether it is satisfying all the conditions. Let me write few of the answers.
Abhay has written 741. I'm writing it somewhere. $741 was one of the answers by Abhay, and many of you are writing 718. Nishcha is also saying 741. Let me write 718 also. काफी सारे लोग 718 लिख रहे हैं. Akshay is writing 781. अरे I'm just giving final 1 minute. After discussing so much, it should not take more than 1 minute. Anup, yes, we are going to discuss it. Don't worry. $781 मैंने लिख लिया है अक्षय. Priyansh 71. Mayur is saying 768. अरे, it's another different answer. 768. Somebody saying 748 also. Ananya. Okay, I'm not taking any more answers. Let's check now. अभिषेक पूछ रहे हैं सर प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया है. क्वेश्चंस का टाइप, क्वेश्चन चीजें बदलती रहती हैं अभिषेक. आई एम नॉट, वी आर नॉट सॉल्विंग राइट नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. राइट नाउ वी आर सॉल्विंग कि सोचना कैसे है. दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग. Many of you are getting the right answer. The right answer is I'm not disclosing yet. Wait, let's check now. Let's check now. अभी you can stop solving. अभी आप solve करना छोड़ो. अभी आप screen पे देखो. We are discussing it. So मुझे ये कुछ अलग-अलग answers मिले हैं comments में. I have written some of them. इसके अलावा भी कुछ और answers थे, मैंने लिखना छोड़ दिया. Let's match them. मैं नीचे से start करता हूँ. 768. Can this be correct? Let's see. अगर ये सही answer है, 768 सही answer है, तो 768, तो इन दोनों में से तो दो नंबर आने चाहिए थे ना. इनमें से दो नंबर आने चाहिए थे. तो दिस 7 मस्ट बी W, दिस 6 ऑल्सो मस्ट बी W, और ये नहीं होगा. देयर मस्ट बी 2 नंबर्स करेक्ट एंड रॉन्ग प्लेस. बट यहां पे तो केवल 1 नंबर ही करेक्ट एंड रॉन्ग प्लेस है, इजंट इट? तो सर्टेनली 768 कैन नॉट बी द आंसर. ये बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई है? आई एम रिपीटिंग, आई सेड दिस अर्लियर ऑल्सो. जो भी आप आंसर निकाल रहे हो, यू कैन रीचेक योरसेल्फ. तो 768 अगर सही आंसर होता तो 7 और 6 तो इस नंबर में भी यूज हुए हैं ना. तो यहां पर 2 W's होने चाहिए थे, बिकॉज 7 इज एट द रॉन्ग प्लेस एज पर योर आंसर. 6 इज ऑल्सो एट द रॉन्ग प्लेस अकॉर्डिंग टू योर आंसर, है ना. तो 2 W होने चाहिए थे. बट इसके रिमार्क में क्या लिखा है? 1 नंबर इज करेक्ट एंड रॉन्ग प्लेस, नॉट 2. सो 768 कैन नॉट बी द आंसर. Right? Let's move to next one. 781. Can this be the correct answer? देखते हैं. 781 अगर आंसर है, अगर ये सही आंसर है, तो according to this last statement, तो only 7 is to be there and it is a wrong place. तो सही है. This one is satisfied. 806, one number is correct and wrong place, so that's also correct. 781 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 is the only number which is there, but it is a wrong place, so this is also satisfied. And in this case 781 की हम बात कर रहे हैं, तो 7 and 1 both are here, तो 2 numbers are correct and both but wrong places, तो ये बात भी satisfy हो रही है. 530, so nothing is correct, that is also being satisfied. And this is finally 548. so 548 में से अब केवल एक ही 8 is only there and 1 number is correct and well placed, but आपके आंसर के अकॉर्डिंग तो ये wrong place हो गया ना, right? तो ये तो रॉन्ग प्लेस हो गया ना आपके आंसर के अकॉर्डिंग, बट इट इज मेंशन्ड दैट दिस इज एट द करेक्ट प्लेस, वेल प्लेस्ड. सो सर्टेनली 781 आल्सो कैन नॉट बी द आंसर. सेम वे वी कैन चेक 741 एज वेल. सो द राइट आंसर हियर इज 718 एंड द प्रोसीजर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. श्री पूजिता पूछ रही है सर 1 नंबर इज करेक्ट बोला है, तो हम एज्यूम करेंगे कि रिमेनिंग 2 नॉट करेक्ट हैं. Yes, Shri Pujita, yes, that's true.
वन नंबर इज करेक्ट का मतलब है कि एक ही नंबर करेक्ट है, बाकी दोनों यूज ही नहीं होंगे, दे आर नॉट करेक्ट. वी कांट एज्यूम देम ना कि दे आर रॉन्ग प्लेस और समथिंग. तो जितने करेक्ट हैं या रॉन्ग प्लेस हैं, वेल प्लेस है, दैट इज मेंशन्ड हियर. सो द अदर नंबर्स आर सर्टेनली नॉट करेक्ट. दैट्स ट्रू. Okay, let's move further. So there's one final practice, and I hope I will like to give it as a homework. You can note it down. I'm moving to the next question now. Ash is asking why can't it be 178? Ash अभी तो समझाया भाई सारी बात. 178 लेके चेक कर लो. If I take it to be 178, you can verify very easily whether it satisfies or not. Let's check the last one. 178. One number is there but wrongly placed. Satisfied. 806. So one number is correct, wrongly placed. That's true. 157. Two numbers are correct but wrong place. But one तो आपका same place पे आ गया ना, isn't it? So this can't be the answer. So don't guess the answers randomly. Yes, one can't be at the first place, as Lokesh is saying. Okay, so here's one more problem for your practice, but we are not solving it now. You can take a screenshot if you wish, or you can note down the clues, whatever way, and you can solve it on your own later. And you can write your answer in the comments. I will check it there at YouTube. I think this is being live streamed at YouTube. Yes, I think yes. So you can put your answer there. I will check it there. Okay, I hope you have taken the screenshot. And now अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं. So मुद्दे की बात ये है, the main thing is there. You have taken the screenshot. So अब बात ये है कि how to develop this thought process. ये सोचना शुरू करें कैसे, इसको कैसे शार्प करें. थोड़ा थोड़ा सोचा, बीच बीच में आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि ब्रेन फ्रीज हो गया या दिमाग ने अभी काम करना बंद कर दिया एंड सो ऑन. बट ग्रेजुअली अगेन यू स्टार्टेड वर्किंग कि हाँ अब कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना. सो हाउ टू डू दैट, तो क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो इन द इनिशियल फेज ऑफ दिस सेशन समबडी मेंशन्ड सुडोकू, and believe me, Sudoku is the best exercise which you can practice daily, which you should practice daily. And we are going to play Sudokus now. Sudoku is wonderful exercise and resource is very simple. It is an open secret, I should say. It's an open secret. All of you know about Sudoku. I'm not sure how many of you have played Sudoku. Have you played Sudoku? Yes or no? You can write in comment. Have you played Sudoku ever? क्या आपने कभी भी सुडोकू सॉल्व किया है? छोटा बड़ा डिफरेंट वैरायटीज का. So believe me, Sudoku is the best exercise. This is actually open secret. I am repeating it. This is open. It's common to everyone. Everyone knows there is something known as Sudoku. But you do not know that this is actual secret. If you practice solving Sudoku regularly, believe me, your mind cells, your brain cells are going to work so fast and so in so amazing ways that you cannot fathom about. आप सोच भी नहीं सकते हो. आपका दिमाग इतना शार्प, इतना अच्छे से काम करेगा, इतना फास्ट काम करेगा. Your response speed will become faster. आप जल्दी चीजों को समझोगे. Exactly. Praveen is saying expert level solved. See, there are many competitions also based on Sudoku. I have participated about 15 years ago, 15, 16, maybe more than that, in national level Sudoku championship. And this year I participated in national and international levels also. And I think I scored somewhere among top hundreds. I was there. I think 78 or 70s. I was in the range of 70s somewhere. So there are various varieties of Sudoku actually. There are various varieties of Sudokus. And so, all the questions which we find in logical reasoning, the only difference with Sudoku is that in Sudoku generally we use numbers. But in the actual questions of LR which we get in CAT or some other exams, mostly they are not having numbers, they are having some places, names, they are replaced by some other letters, some other things. But the idea is same. Meanwhile, I am seeing one statement here. Abhay Singh saying that homework completed. You got the answer. So let me tell you, Abhay, no, it's not yet correct. Yes, Risha, that is correct. 679. Yes, 679 is the answer. Akshaya, that's correct. So those who have noted down the previous homework puzzle, 679 is the right answer. तो जिन्होंने अभी सॉल्व नहीं किया है बाद में भी कर सकते हो. लेट्स मूव फर्दर. अच्छा, इज देयर एनीवन हु हैज नेवर सॉल्व्ड अ सुडोकू? प्लीज कमेंट.
क्या आप में से कोई ऐसा है कि आई हैव नेवर सॉल्व्ड सुडोकू, कभी सुडोकू सॉल्व नहीं किया? Certainly there must be many. I'm having here 200 plus students, 213, 14 something. Yes, many are there. काफी सारे certainly ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी सुडोकू सॉल्व नहीं किया है. So this is a tip for you for today कि daily सुडोकू सॉल्व करो. Okay, yes, Shri Pujita, suggest some books for DILR. See, best resource for anything. I have said in earlier also कि nowadays in the era of social media and so much information explosion, we can say, resources की कोई कमी नहीं है. There are so many books, so many websites, so many things, but I have told you the best thing: practice Sudoku, specifically for LR and DI part. Practice solving Sudoku, and other than that, certainly previous year questions is always the best way. And one thing more I would like to say: always restrict yourself to the limited study material. There are unlimited things available. बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट आप सारी चीजें नहीं कर पाओगे. प्रणवी इज सेइंग ट्राइड बट नॉट सॉल्व्ड. हाँ, ऐसा कई सुडोकू का कईयों का एक्सपीरियंस ऐसा होगा जिन्होंने स्टार्ट किया सॉल्व करना, सॉल्व नहीं कर पाए. बट एनीवे, सो वी आर स्टार्टिंग स्मॉल. अभी हम स्टार्ट करते हैं और हम छोटे से लेवल से स्टार्ट करना सॉल्व करेंगे. एंड यश, आई हैव टोल्ड दैट फॉर DILR specifically Sudoku, and the second part is previous year's questions. That is the best resource. तो उसके अलावा you can stick to only selected study material as you are enrolled. Most of you are enrolled here if in this iQuanta our course, so we'll be getting study material from here. So just restrict to that. Now there is no need to go for unlimited material. As I said, there is unlimited material available. हाँ, काफी सारी चीजें आप कहीं भी ज्वाइन किया हो. अगर आप मान लो कहीं और पढ़ रहे हो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं और पढ़ रहे हो शायद, है ना, या जिन्होंने पहले कभी पढ़ा हो. सो यू मस्ट हैव अनलिमिटेड मटेरियल. सो मटेरियल की कमी नहीं है, बट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द लिमिटेड मटेरियल, एंड एट iQuanta I can guarantee you, so there is a good quality of material available and enough quantity available. So just restrict yourself to the limited material, quality material, and solve it thoroughly. That is sufficient. रिमझिम पूछ रही है क्रैक द कोड टाइप के जैट में आया था लास्ट ईयर, है ना, मे बी दिस वर्क्स. पता नहीं भाई रिमझिम, मैंने तो कई सालों से जैट दिया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर. सो बट यस, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, माई पर्पज इज नॉट टू कि देखना कि एग्जाम में अभी कौन सा क्वेश्चन आया है. वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट राइट नाउ. सो अवर होल ऑब्जेक्टिव इज दैट कि दिमाग को कैसे यूज करना है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सुडोकू. So those who know solving Sudoku, they can certainly solve it very faster. It is just simple 4x4 Sudoku. So I'm starting with very basics. So जिन्होंने कभी Sudoku solve नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ. So Sudoku is a number game. It's generally a square grid, right? So this is a 4x4 Sudoku. So क्या करना है? Fill 1, 2, 3, 4 exactly once in every row. रो का मतलब होता है horizontal line, right? So you can see the 4 boxes, 1, 2, 3, 4. There are 4 boxes in every horizontal line, right? And also there are 4 boxes in every vertical line also. So vertical lines are called columns. So we need to fill 1, 2, 3, 4 exactly once in every row, column, and a block of 4 boxes. So block of 4 boxes, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, I'm not sure कि आपकी स्क्रीन पे कितना अच्छे से विजिबल है कि नहीं है. मुझे तो यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है. आई होप आपको भी दिखाई दे रहा होगा. That this is a thick line. So this thick line boundary is having small 4 boxes inside it, right? तो normally जो आपने न्यूज़पेपर में सॉल्व किया, कई लोगों ने आपने बताया था. So you have done it in newspaper. Generally you find 9x9 Sudoku. This is a smaller version. This is simply 4x4 Sudoku. तो हमें 1 से लेके 4 तक हर horizontal line में, हर रो में, हर कॉलम में और हर ब्लॉक ऑफ 4 बॉक्सेस के अंदर फिल करना है. दिस इज वेरी इजी गेम and certainly it can be solved in less than 10 seconds. It can be solved in less than 10 seconds. Yes. So yes, many of you have completed also. So don't worry. I'm going to ask you one by one now. So अभी हम discuss करने के लिए I'm naming all these boxes. I'm putting some letters here. Let's say call this A, B, C, D, and let's call them maybe P, Q, R, S. Okay, so I've named all the cells now. So this cell will be known as AP, this will be known as BP, CP, and so on, right? Okay, now you tell me which cell. You have to write in the comment. Don't write the answers because it will not be possible to check. You just tell me that in which cell you can fill a number first. Which cell can you fill first?
Just write that. Think and write that. Which cell? You can write the name of the cell. Which cell can you fill first? Himani is saying D. D में कौन सा वाला बेटा? P Q R S. Which one? Write the correct name. Aviral is saying AQ. AQ पे 4 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, but 1 या 3 आ सकता है ना? I'm not sure, Aviral. AQ, BR is already 4 बेटा. BR तो already 4 है. CQ, Vanshika is saying CQ पे, हाँ, yes, CQ is a good point to start with. CQ पे देखो, CQ पे 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, but what about 4? Yes, 4 will be there. Why? Because for this box or this block, 4 will not come in these two, so this must be 4, isn't it? I repeat, in this block of 4 numbers हमें 1 2 3 4 fill करना था. So इन तीनों में से 4 यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो this CQ must be certainly 4. That's correct. Good. So this CQ is certainly 4. Okay, I would like to ask about CR. CR में देखो जरा, CR की बजाय ये DR, sorry, DR. So DR में 2, can I fill 2 here? Certainly no, because 2 is already there in this row, right? Can I fill 3 here? No, 3 भी नहीं आ सकता, because 3 is already there in this block, right? And 4 भी नहीं आ सकता, because 4 is already there in this column. So this DR will be 1. Is it clear? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ, yes, Sahil, that's correct. This will be 1. Okay, now this is 1, 2. So can you now tell me what will come in this CR? What will come in CR? It cannot be filled with 1, तो 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो क्या आएगा? It will be 2, right? Yes. Now in this column it's very easy now. So 1 2 4 is already there, तो यहाँ पर क्या आएगा? This will be 3. And let's see this block now. 1 2 3 are already there, so this must be 4, isn't it? Good. Let's move quickly. Where should we go? Okay, what about DP? 1 is there, 2 is there, 4 is there. So what is remaining? क्या बचा है यहाँ के लिए? This must be 3. Alright? Now here, so 2, 3, 4 are already there. It must be 1. In this column now, 1, 3, 4 are there. So 2 is remaining. Let's move further. In this block, in this box, this BS. So 2 will not come, 3 will not come, 4 will not come. तो क्या आने वाला है यहाँ पे? This is 1 and this is 2 and this is 1 and this is 3. And this whole exercise could have been done in just less than 10 seconds. Okay, understood? Understood? समझ में आ गया है? Good. Ready for the next one? Yes, it was very easy, Chintan. I want the same remarks when you are solving the tougher questions also, lengthier questions also. बहुत आसान था. जब क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आता है ना कि हाँ यस मैंने सॉल्व किया, आसान था, है ना? सो अदर्स आर थिंकिंग यार कैसे किया, बट यू आर गोइंग कॉन्फिडेंटली. So that's the situation which I want all of you to experience. Yes sir, next question please. Okay, here it is. Now in between I can see Shri Pujita is saying sir please repeat आप ही करेंगे बेटा. I'm giving you another one now. What one change I'm making here, and that change is in place of 1 2 3 4 as I was saying कि CAT में जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं उसमें नॉर्मली नंबर्स के बजाय हमें कुछ नेम्स, कुछ लेटर्स, कुछ प्लेसेस, कुछ अलग चीजें मिलती हैं. सो आई एम जस्ट चेंजिंग दैट, बट आई एम स्टिल कीपिंग द डिफिकल्टी लेवल इजियर राइट नाउ, सिंपली 4x4 ओनली. ओके ओके, डोंट वरी दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू सोल्व. जो अच्छे से नहीं कर पाए, रुकिया बोल रही है दिमाग के ऊपर से गया, दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा. आई थिंक इट विल बी इजियर फॉर यू टू ड्रॉ इट. आप पहले से ही 4x4 ग्रिड बना लीजिए,
Yeah, all of you, I recommend all of you, you just draw a 4x4 grid quickly, and when I show you the question, you have to just put the numbers or whatever symbols are there, and you start solving. Okay? Let's move further now. So here is the next question. It's again 4x4 Sudoku, and this time in place of numbers I have used the letters, alphabets A, B, C and D. So fill A, B, C, D exactly once in every row, column and block of 4 boxes. Exactly similar questions, similar conditions. I've just changed the numbers with the alphabets. Answer, solve this. Okay, I'm seeing the comments. Done, done, done. Good. Good. Many of you are saying done. Tulsi, HP laptop, Saishri, Akshaya, Soham, Yalvarti, Praveen, Yashi, Rahul, Chintan, Megamik, Rajat, Risha, Oscar. Can there be multiple answers of Sudoku? Generally, no. No, Oscar. A good puzzle is that which is having only one solution. Sometimes Sudokus are not correct, incorrect. In that case, there may be multiple solutions. But for a correct Sudoku, there must be only one solution. Archie has done, Yash, Priyansh, Amrita is asking, how do we know where to start? Yes, that is the thinking part, Amrita. That's what we are working on. So how to think where to start? You see where you are having different clues, where you are sure. Okay, many of you have done. Okay, now I am asking you, as Amrita was asking, ki how do we get to know ki start kahan pe karna hai, where to start from? Okay, let's check any place. If I am asking about this box, so in this box, I know that A will not come, right? A will not come here and D will not come. But what about B or C? Both may be there. I'm not sure about that, right? So this is not a good place to start with. I'm looking for those places where I certainly know that which digit is going to come. Okay, if I move to this one, now think, can I fill D here? Yes or no? Can I fill D here? No, D will not come here, right? Because D is already there in this row. Is it clear? I'm looking for your comments. Yes, we cannot fill D here. Why? Because D is already there in this same line, same horizontal line or row, right? Okay, now can I fill C here? In this same block I'm asking, in the same cell, can I fill C? C will not be there, right? Why? Because C is inside this block of 4 boxes. C is already there. So C will also not come. Can B be filled here? यहाँ पे B लिख सकते हैं क्या? B भी नहीं आएगा. Why? Because B is already there in this column. तो फिर यहां पर क्या बचा है? It can be filled by A. Yes, that's correct, Vanshika. Good. Is it clear to everyone? Right? So it must be A. ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे तुक्के नहीं मारने हैं, मैं गेस नहीं कर रहा हूं. आई एम गोइंग फॉर ओनली दोज प्लेसेस for which I am certainly sure, right? Accuracy. So this must be A. Let's move further. What will come in this place now?
It can't be filled with A, it can't be filled with B, it can't be filled with C. तो यहां पे क्या आने वाला है? It has to be D, right? Is it okay? So those who were saying not understood, ऊपर से गया, कौन कौन थे, मैं नाम भूल गया, रुकिया, I think one was Amrita, 1-2 more students were there. Is it clear? Amrita is saying understood. Good, thank you Amrita. मुझे ढूंढ ढूंढ के पकड़ के निकालने, there are more than 200 students, मुझे पकड़ पकड़ के निकालने पड़ेंगे ना जिनको कोई अटक गया है. Is it okay? Okay, let's move further now. Now it's very easy. In this column, I have already filled A, B, and D. So what is left here? It must be C, right? In this block of 4 boxes, 3 are already filled, A, C, and D. तो यहां पे क्या आने वाला है? It should be B, isn't it? Now in this row, already 3 are filled. तो यहां पे क्या बचा है? What will come in this place? It must be C, right? Wonderful. Let's move further fast. Which box can I fill now? Let me ask you about this one. So A can't come here, B can't come here, C can't come here. So what will come in this place? It must be D, right? Now in this column, A, C, D are already there. So what will come in this one? It must be B, isn't it? Now it's very fast. I can't stop myself. Now in this row, B, C, and D are already there. So it must be A, right? Now let's see this one. So B is there, C is there, D is there. So what is left? A, right? And in this block, 3 are already filled, A, B, and C. So this must be D, right? Move further. In this row, if I'm seeing A, C, D are already there. So what will come in this box? It must be B. And this final remaining box certainly will be filled by C. I hope this is clear. So I will repeat that please make it a daily habit of solving Sudoku. Sudoku is a very, very nice exercise to make you think. There will be some different difficulty level questions. Some will be easier, some will be moderate, and some will be extremely tough also. But spend time on solving it. Spend time. It is worth. It's worth investing time. Let's move further now. So there's one more question. I hope it is clear to everyone. Yes, clear, good. Okay, now the next one, again 4x4 Sudoku. Please solve it faster. जल्दी से solve करना. दीक्षा को भी समझ में आ गया. Thank you. Okay, here it is. Now this time, in place of letters, I have used the 4 symbols. The symbols are square, triangle, circle, cross. Square, triangle, circle, cross. Draw it and then solve it. सत्यम is saying I have one more answer. सत्यम कहीं ना कहीं गलती होगा, उसको रीचेक करो. Okay, I have started getting the answers. Done. Nice. Good. Many of you have done. I'm waiting for कौन थे? One was that forgot the name. Okay, many of you have done. So let me do it quickly now. So we were to fill square, triangle, circle, cross. Square, triangle, circle, cross. I'm filling in them now. Square, triangle, circle, cross. Square, triangle, circle, cross. यहाँ पे क्या आएगा? Square is already there. Circle is already there.
triangle is remaining, cross is already there, right? So this is triangle. Good. Let's move further. Now let me fill it this one. So square, triangle, square, triangle, circle, and cross, right? Now in this row, square is remaining, triangle, circle, cross are already there, so square is remaining. Let's move further. In this one, square, triangle, circle, cross is remaining, right? Now in this block only one box is remaining, square, triangle is remaining, circle, cross. Now in this row, if I'm saying square, triangle, circle is remaining because cross is already there. In this column now, square is remaining, triangle, circle, cross are already there, so square will come here. And if I move further, so in this column now, so square, triangle, circle is remaining because cross is already there, this is circle. And let's come to this part, square, triangle is remaining, circle and cross are already there, so this is triangle. And now this one is going to be circle, this is square, and this is cross. As I said earlier, it's not going to take more than 10 seconds. Good. So although we have, I thought of doing some more variety of Sudokus also, but this was just basic Sudoku. So we'll be solving some more variety of Sudoku next time. So we are moving to some quick puzzles now. In between, I'm not introducing to now the other puzzle, although here it is on your screen. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot of this and try to solve it. हाँ सत्यम, मैंने सुना आपका, you are saying I have one more answer of previous question. We solved it everything logically. We didn't guess anywhere. So I don't think there should be. So you need to recheck. And now I'm at this stage. It is difficult to discuss that. So we can discuss it later. So right now we should move forward, right? So this puzzle you can take a screenshot. So we are not discussing it now. Satyam wants his answer to be rechecked. Bhai, can we discuss it later? That's what I'm discussing. Okay, if you wish to do it now, no problem. You were talking about this ABCD, right? ABCD 1, Satyam? Yes, हाँ वो सुडोकू ही था, वो सुडोकू ही है, and that's of a different variety. So we are not able to discuss it now. We will be discussing some more questions. I hope you have taken the screenshot of that and you can try solving this. We will discuss it sometime later. So Satyam, if you wish to discuss, you can write your answer in the comment. You can write your answer in the comment according to rows. First row, second row, third row, fourth row. Fast. Satyam, please write. So let's everyone discuss. Let's check. So Satyam is saying that he has got some different answer. Yes, Satyam, write your answer. लगता है सत्यम जी से हमारा संपर्क टूट गया है. सत्यम, सत्यम 1, सत्यम 2, okay, Satyam has written finally. So Satyam is writing, I'm writing his answer. He is saying CADB. Then he's writing ACBD, ACBD, and BDAC, and finally he's writing DBCA, DBCA. So let me quickly draw the grid. Okay, so the original given numbers were A, that's correct, B, that's fine, C, that's okay, and D, that's also fine. Now, bhai sahab, kaisi baatein kar rahe ho yaar? In this block, can't you see two B's together? How it can be correct?
सत्यम भैया गड़बड़ हो गया. See, we need to see this block of 4 boxes also, not only rows and columns. केवल हमें rows या horizontal line और vertical line ही नहीं देखने हैं. We need to see the 4 boxes in one block. So this condition is not being satisfied, Satyam. Is it okay? यहां भी गड़बड़ है ना, इसमें भी 2A एक साथ में आ रहे हैं, यहां पर भी 2B साथ में आ गए, यहां भी 2A और 2C है. That's not correct. Is it okay? Satyam, understood? Okay, don't worry, don't worry. अरे हंसो मत भाई. I hope doubt is clear now. Is it resolved? Good, thank you. Let's move further. So as I said, you can take screenshot of this Sudoku puzzle. This is also a variety of Sudoku. So we are not going to discuss now because I'm running out of time. But we will discuss it further. You can try, by the way, on your own. So you can may have taken a screenshot by now. I'm moving further. I want to do 1 or 2 more puzzles. Taken the screenshot. Should I move further? Anjali, I'm not going to discuss this question, so I'm not explaining this. You can take a screenshot and try to understand and solve if possible for you. So we will discuss it in some further session, not now. Okay, I'm moving further now. So there are some single puzzles like this. So they have appeared in CAT as well as other exams, maybe in quant part only, or sometimes as a set of 2-3 questions in LR section also. So here's one puzzle for you. So I'm reading it for you and we will solve it together. It says, in an apparel store, there are 3 boxes containing hats. There are 3 boxes containing hats. तो 3 boxes हैं, मैं 3 boxes बना लेता हूँ. Let's say box 1, box 2, box 3. तो इन तीनों में कुछ hats हैं. The boxes are labeled incorrectly. So what does it mean? तो boxes are labeled incorrectly. That means कि जो इन पर लेबल लगे हैं वो गलत लगे हैं. जो लेबल लगा है उस पर जो भी कुछ लिखा है वो उसके अंदर कंटेंट वो वाला नहीं है, right? The label says black hats, brown hats and black and brown hats. So let me make the labels. तो maybe इस पर लेबल लगा है black hats, तो black hats. इस पे लगा है brown hats और इस पे लगा है black and brown. Black and brown. Okay, so these are 3 labels. So what does the condition mean? Kundan, can you please suggest me a practice material apart from PYQs? Nothing is required. Nothing is required. Previous year's questions plus the classes which you are attending here, that's sufficient. Nothing else. Nothing else is required. Availabilities of unlimited things, but nothing is required. Let's stick to this question now. So इस पहले पे लेबल लगा है black, इस पे लगा है brown, इस पे लगा है black and brown, right? And it is mentioned that labels are incorrect. तीनों लेबल गलत है. आगे बोलता है if you are allowed to choose a box, you are allowed to choose a box, तो मतलब एक box choose करना है. Now question is what is the minimum number of times that you will have to draw a hat from that box? Which box? कौन से बॉक्स से हैट निकालना है? जो बॉक्स आप चूज करेंगे. तो यू कैन चूज एनी वन बॉक्स. आप किसी भी एक बॉक्स को चूज कर सकते हैं और उसमें से हमें हैट निकालना है. तो कितनी मिनिमम बार, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ड्रॉ द हैट टू करेक्टली डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ एवरी बॉक्स. तो हर एक बॉक्स का कंटेंट हमें पता चल जाना चाहिए. आई एम गेटिंग सम आंसर्स हियर. 6, 3, ऑप्शंस यू आर हैविंग 4, 3, 2, 1. 6 इज नॉट देयर ऑप्शन निश्चय. It's 2 time, 3, 2, 4, 2, 4. Okay, let me ask one of you if anybody would like to volunteer. How you are answering this 2, 3 or 4? How you are saying answer this 2, 3 or 4? Alpha trader Vaibhav is writing 3C2. 3C2 कहाँ से आ गया भैया? 6. अरे 3C2. We have to choose only one box. आपको एक बॉक्स चूज करना है. अच्छा पहले मुझे ये बताओ कौन सा बॉक्स चूज करना चाहोगे? Which box should we choose? We have to choose only one box. उसी में से हमें हैट्स निकालने हैं, राइट? और सभी का कंटेंट बताना है. तो विच बॉक्स शुड वी चूज? ब्लैक वाला या ब्राउन लेबल वाला या ब्लैक एंड ब्राउन लेबल वाला? विच बॉक्स शुड वी चूज? यस आदिश्वर, यू कैन राइट. आई एम सीइंग द कमेंट्स हियर.
वैभव से कॉम्बिनेशन वाला, कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना बेटा, हमें एक ही बॉक्स चूज करना है ना। अपराजिता सिंह ब्लैक और ब्राउन, मतलब ब्लैक जिसपे ओनली ब्लैक लिखा है या ओनली ब्राउन लिखा है, इनमें से कोई भी एक चूज कर ले। सही बात है। सी देखो यहां पे दो ही तरह की ऑप्शंस हैं। मीमांशा इज राइटिंग ब्लैक एंड ब्राउन वाला, दो ही तरह की ऑप्शंस हैं। या तो मैं ब्लैक वाला बॉक्स चूज करूं तो भी वही बात होगी जो ब्राउन वाला बॉक्स चूज करने से होगा, बिकॉज दैट इज सिमिलर थिंग। और या दूसरी बात ये होगी कि मैं ब्लैक एंड ब्राउन वाला बॉक्स चूज करूं। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। लेट्स ओके, दोनों चीजें देखते हैं। अगर मैंने ब्लैक वाला बॉक्स चूज कर लिया, एक बार के लिए मान लेते हैं कि आई हैव चोजन दिस ब्लैक बॉक्स, राइट। तो व्हेन आई एम ड्रॉइंग अ हैट, इसमें से एक हैट निकालूंगा, तो इसमें से वो हैट कौन सा हो सकता है? इट कैन बी ईदर ब्लैक और ब्राउन, राइट। तो मान लेते हैं इससे मैंने एक हैट निकाला, दैट हैट कम्स आउट टू बी ब्राउन। मान लेते हैं, क्योंकि ये ब्राउन भी हो सकता था, ब्लैक भी हो सकता था, मान लेते हैं ब्राउन आ गया। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द कंटेंट इन दिस बॉक्स? इस बॉक्स का कंटेंट क्या होगा? इस बॉक्स में कैसे वाले हैट्स हैं? इससे एक हैट मैंने निकाला ब्लैक वाले बॉक्स से एंड इट केम आउट टू बी ब्राउन, वो ब्राउन आ गया। तो इस बॉक्स का कंटेंट जो है, इस बॉक्स में जो हैट्स हैं वो कौन से वाले हैं? सो वनीशा इज राइटिंग मे बी ब्लैक और ब्राउन और ओनली ब्राउन, दोनों हो सकते हैं ना। हो सकता है सारे हैट्स इसके अंदर ब्राउन वाले ही हो, ओनली ब्राउन इज द कंटेंट ऑफ दिस बॉक्स। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर ब्लैक एंड ब्राउन दोनों तरह वाले हैं, राइट। तो इट्स नॉट श्योर। मैं एक और हैट निकालता हूं, वो भी ब्राउन आ गया। एक और हैट निकालता हूं, वो भी ब्राउन आ गया, एंड सो ऑन, राइट। देयर इज नो एंड टू इट। सो दैट मीन्स आई कैन नेवर बी सर्टेन कि इसमें जो कंटेंट है वो सारा ओनली ब्राउन है या ब्लैक एंड ब्राउन है। इतना तो मुझे मालूम है कि इसमें सिर्फ ब्लैक हैट्स तो नहीं होने वाले थे, राइट। सो दैट मीन्स इट इज नॉट श्योर, वी कांट बी श्योर। Yes, we can't say. Wonderful. And same is the situation going to be there with this brown labeled hat, brown labeled box also, right? तो इनको छोड़ते हैं. Let's move to this black and brown box. ठीक है, इस black and brown वाले पे आते हैं. Okay, yes, boxes are labeled incorrectly. That's the point here. So if I'm moving to this black and brown box, और इससे मैंने एक hat निकाला, and that hat comes out to be brown, ऐसा मान लेते हैं. तो नाउ कैन यू टेल मी कि इस बॉक्स का कंटेंट कौन से वाला है? इस बॉक्स का कंटेंट कौन सा होगा? इसमें कौन से हैट्स हैं? ब्लैक एंड ब्राउन लेबल वाले बॉक्स में से आई हैव ड्रॉन वन हैट एंड दैट केम आउट टू बी ब्राउन. तो विच कंटेंट इज देयर? विच टाइप ऑफ हैट्स आर देयर? यस, दैट्स करेक्ट श्रावणी, इट इज ओनली ब्राउन. यस, तो दिस बॉक्स इज कंटेनिंग ओनली ब्राउन. इसका हमें एग्जैक्ट कंटेंट मिल गया. इसमें सिर्फ ब्राउन वाले हैट्स ही हैं, क्योंकि इसमें मिक्स हैट्स तो होने नहीं थे, और एक हैट ब्राउन आ चुका है, तो ओनली ब्लैक इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो सर्टेनली इट मस्ट कंटेन ओनली ब्राउन हैट्स, राइट. अब ओनली ब्राउन यहां पे है, तो किसी ना किसी बॉक्स में तो ओनली ब्लैक भी होना था ना. क्या ओनली ब्लैक इस पहले बॉक्स में हो सकता है क्या? सर्टेनली नॉट. तो ओनली ब्लैक इज देयर इन दिस सेकेंड बॉक्स, इजंट इट? क्योंकि ब्लैक इसमें तो हो नहीं सकता था. नाउ द रिमेनिंग कंटेंट दैट इज अ मिक्स्ड, that is black and brown, that must be there in this first box, right. That means what will be the answer then? We need to choose this box labeled with black and brown, and we need to draw how many number of hats? Only one. So answer here is option D, that is 1. So only one hat needed to be taken out to confirm that the content, to determine the content of every box correctly. I hope this is clear. So there are many more things to do, and we'll be doing it in further sessions. So for today we'll stop it here, and if there's any doubt, any comment, you can tell me. So there are some more questions we'll be discussing next time. Many different types of puzzles are there, the various puzzles books are there. And as I said in the beginning, so we are going to have this non-engineer CAT module, and in which specifically we'll be focusing on 6th to 10th class NCERT in alignment with CAT syllabus, conceptual videos. So all the concepts will be cleared from the very, very beginning. So those who want me to repeat the previous part, you can draw the boxes on your own. It's not difficult. So what was our conclusion? So we need to choose the box with the label black and brown. What is the benefit?
By just taking out even one hat, we knew the content of every box. So think once more, think once more. Okay, so I'm having some comments here. Anjali is asking what tower means in the previous question. Towers means the building, beta. There are different buildings, there are different towers of different heights. So the numbers in the Sudoku were actually representing the heights of different towers. So think on your own, don't worry. We'll discuss in some further session. I will just saying it was a fun session. Thank you. So thank you also for being a part of it. Diksha didn't get this question. This question was very easy. The question we just did, Diksha. So there were 3 boxes with different wrong labels, incorrect labels, and we were to choose one box, and from that box we were to find the number of hats so that we can determine the content. Don't worry, I will repeat, no problem. And Rim Jim waiting for next session. I too, same to you. Black and brown and a single color hat. Yes, that's correct, Oscar. So we need to choose the hat from the black and brown labeled box. Sir, when will it be started? So you need to connect with our admission team, Imansha. Thank you everyone, thank you. Neha, yes, let's repeat. It was a great and productive session. Thanks for that. Can't believe how fast time passed in this class. Subrajit, yes, we were to do many things, but yes, time passes, no problem. The box labeled as brown may also have black and brown hats. Yes, that's correct, Aryan. So those who are having doubt in the previous question, I'm opening that same slide again. But before that, so here's again the whole team, and this is really a wonderful team. They're all looking very nice, and they're all experienced persons here. And if you are willing to learn, it is going to be really maybe life-changing scenario for you. Okay, I'm moving to that question again once more. So those who are having doubt in that, we just discussed in this hat puzzle, we are having 3 different types of boxes whose labels are incorrect. So don't miss this data. Labels are incorrect. So labels are black hats, brown hats, black and brown hats. लेबल सब गलत लगे हुए हैं. इट मीन्स ब्लैक हैट वाले के अंदर सिर्फ ब्लैक हैट्स नहीं है. देयर कैन बी ओनली ब्राउन हैट्स और इट मे हैव ब्लैक एंड ब्राउन मिक्स. राइट, सेम वे ब्राउन हैट्स वाला जिस पर लेबल लगा है उसमें भी ओनली ब्राउन हैट्स तो नहीं है. इट हैज टू बी ओनली ब्लैक हैट्स और मिक्स ब्लैक एंड ब्राउन बोथ. एंड बट इन दिस लास्ट वन ब्लैक एंड ब्राउन, तो इसमें जो हैट्स हैं उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसमें मिक्सचर हैट्स तो नहीं है. इसमें या तो ओनली ब्राउन हैट्स होने वाले हैं या ओनली ब्लैक हैट्स होने वाले हैं. तो एक हैट निकालते ही हमें पता चल गया कि इसका जो कंटेंट है वो क्या है. वी एज्यूम कि इसमें सारे जो इसमें एक हैट हमने निकाला वो ब्राउन था, ऐसा हमने मान लिया. तो अगर वो ब्राउन है दैट मीन्स इसमें सारे ही हैट्स ब्राउन हैं. देयर इज नो नीड टू टेक आउट मोर हैट्स. राइट, सो नेहा एंड अदर्स दोज हु आर आस्किंग द डाउट. सो अगर हम यहां से एक भी हैट निकालते हैं वो जिस भी कलर का है, तो अगर वो ब्राउन आया तो इसमें पूरा कंटेंट ब्राउन ही है. अगर ब्लैक आता तो भी वही बात थी, सारा कंटेंट ब्लैक ही होने वाला था. राइट, सो तो सारा लॉजिक सेम ही जाने वाला था. तो अगर वो ब्राउन है तो फिर बाकी कंटेंट कौन कौन सा बचा? बाकी कंटेंट बचा ओनली ब्लैक एंड ब्लैक एंड ब्राउन मिक्स. नाउ ओनली ब्लैक कैन नॉट बी इन द ब्लैक लेबल्ड बॉक्स. राइट, तो ब्राउन लेबल्ड वाले बॉक्स में हमें ओनली ब्लैक मिलने वाला है एंड द मिक्स कंटेंट दैट इज ब्लैक एंड ब्राउन विल बी इन द रिमेनिंग बॉक्स. सो दैट्स द बेसिक आइडियोलॉजी. So I will end it here and I will take your leave. Thank you. And yes, waiting for the next session. I too am waiting for the next session. Thank you. Wonderful. So bye bye. Take care. Good night.